Hello and welcome back to Instant Seekh. मेरा नाम है कृष्णा कहर. In this video, we will be starting with our UGC NET Paper 1 PYQ series. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे UGC NET 2024 में आए हुए ICT क्वेश्चंस के सॉल्यूशन. स्पेसिफिकली 21 एंड 22 अगस्त को जो आपका पेपर 1 हुआ था, दोनों ही शिफ्ट के हम ICT क्वेश्चंस को देखेंगे. So let's start. Do follow our Telegram channel. इस क्लास के पीडीएफ नोट्स एंड अदर पीवाईक्यूज के भी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे. सो डू फॉलो द टेलीग्राम चैनल एज वेल. लेट्स स्टार्ट विथ अवर क्वेश्चंस. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन. A history teacher wants to create an interactive timeline showcasing the evolution of different art movements over centuries. Which tool would best support the creation of this multimedia presentation? Okay, एक हिस्ट्री टीचर है जो टाइमलाइन को शोकेस करना चाहता है जिसमें वो इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट आर्ट मूवमेंट्स ओवर द सेंचुरीज दिखाएगा. ओके, फॉर दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन कौन सा टूल बेस्ट होगा? ओके, ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं: प्रेजी, एडोब इलस्ट्रेटर, फ्लिपकार्ट एंड गूगल फॉर्म्स. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज प्रेजी. प्रेजी इज अ डायनेमिक प्रेजेंटेशन टूल. प्रेजी आपका क्या है? आपका एक प्रेजेंटेशन टूल है. Adobe Illustrator, Flipkart, and Google Forms are not presentation tool. Okay, what is Prezi? Prezi is a dynamic presentation tool known for creating non-linear interactive presentations. Non-linear interactive presentations. Okay, perfect for timelines moving through historical events. Okay, बाकी के क्या options है आपके? Adobe Illustrator, why it is wrong? Okay, we use Adobe Illustrator for graphic designing. हम क्यों यूज करते हैं Adobe Illustrator को? ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए. ओके, फ्लिपकार्ट इज यूज्ड फॉर व्हाट? स्टूडेंट वीडियो डिस्कशंस. ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड वीडियो डिस्कशंस के लिए अमंग द स्टूडेंट्स. एंड गूगल फॉर्म, एज यू नो, हम क्यों यूज करते हैं? दीज वी यूज फॉर सर्विस एंड क्वेश्चनर्स, नॉट फॉर मल्टीमीडिया पर्पस. सो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. Which of the following electronic technologies is the key technology for making the first generation electronic computer? Okay, ICT में खासकर आपको 3 कॉन्सेप्ट करके ही जाने हैं. अब ये 3 कॉन्सेप्ट कौन से हैं? फर्स्ट इज जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, आपको पढ़ के ही जाने हैं. ओके, कौन से ईयर में कौन से जनरेशन के थे और उनमें कौन सी टेक्नोलॉजीज का यूज हुआ था. ओके, आपको इसमें ईयर याद रखना है, कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज हुई थी and the name, right? These three you need to remember. Second concept is memory. Memory related भी बहुत सारे questions बनते हैं आपके ICT से. So ये आपको okay, you need to go through this. And next is number system, number conversion system. Okay, octal, binary, hexadecimal. Okay, all those things. Okay, so let's come back to the question. क्या पूछा गया है यहाँ पे? Which of the following electronic technology is the key technology for making the first generation of computers? First generation of computers कौन से बेसिस पे, किस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे थे? तो आपका करेक्ट आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब बेस्ड. What? Vacuum tube based. First generation of computers vacuum tube technologies पे based थे. Let's see the other. Okay, so first generation computers कहाँ से कहाँ थे? 1940 से 1950s के बीच में इनका यूज हुआ, जो यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब्स फॉर क्रिएशन ऑफ सर्किट एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी. ट्रांजिस्टर्स कहाँ पे आए? ट्रांजिस्टर्स आपके आए सेकेंड जनरेशन में. किसमें? सेकेंड जनरेशन. आईसी third generation. Integrated circuits were introduced in third generation and dual core CPUs are modern processors. Okay, so आपका correct answer रहेगा first generation computers use the technology vacuum tube. Okay, that is your answer 2. Answer number 3, sorry. Okay, let's move on to the next. Okay, which of the following statement best describes a blog? एक blog क्या होता है? Okay, आपने blogs पढ़े होंगे. Blogs can be on any topic, किसी भी टॉपिक के ऊपर होते हैं वो. ओके, सो लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं. अ वेबसाइट दैट अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू कोलैबोरेट एंड क्रिएट इंफॉर्मेशन. नो, ब्लॉग ये अलाउ नहीं करता कि मल्टीपल यूजर्स कोलैबोरेट करें और उसमें इंफॉर्मेशन एम्बेड करें. सेकंड ऑप्शन, अ क्रोनोलॉजिकल लिस्ट of post on a website typically written by a single author about a subject. Yes, this is the exact what a blog is. Okay, आपके blog का मतलब ही यही होता है
कि एक स्पेसिफिक ब्लॉक क्रिएट किया जाता है किसी एक सिंगल ऑथर या यूजर से, जिसके ऊपर वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आर्टिकल्स या पोस्ट करते जाता है। ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बाकी भी हम ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। अ सीरीज ऑफ ऑडियोज एंड वीडियो एपिसोड्स दैट डिस्क्राइब्स download or stream to that device. No, basically these are the series. Okay, a standardized format that allows users to subscribe to new view content updates from a creator. No, this is mostly, ये इसका आप बोल सकते हैं ये YouTube का डेफिनेशन हो जाएगा। ओके, सो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ वर्ड A to E that correctly filling the blanks in the following paragraph. Okay, आपको एक पैराग्राफ दिया गया हुआ है। I will just read this paragraph. The dash is the brain of the computer and the dash processor made by Intel is an example of this. The speed of the processor is measured in dash. Dash is a volatile memory whereas dash is important in computers. Okay, so जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले, okay, आपको करना क्या है, आपको पैराग्राफ को ब्रेक करना है मल्टीपल सेंटेंसेस में, कि और किसी दो सेंटेंसेस के आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आपको करेक्टली आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आप अपना पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस। व्हाट इट इज सेइंग, द डैश इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। हमने पढ़ा है एलिमेंट्री स्कूल से ही, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, दिस यू शुड नो, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ओके, सो आपका फर्स्ट ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेसर मेड बाय इंटेल। Okay, so आपका Pentium is the right answer. Okay, Pentium is the processor made by Intel. Next, the speed of the processor is measured in what? The speed of the processor is measured in hertz. Hertz is what? A matrix to measure. Okay, okay. So option E आएगा यहाँ पे, B, D, E. Next, dash is a volatile memory. Just now I have said कुछ कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। ओके, मेमोरी के अंदर आपको पता होना चाहिए वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या है। ओके, सो वोलेटाइल में आपका आ जाता है रैम एंड नॉन वोलेटाइल में आपका आ जाता है रोम। ओके, सो वोलेटाइल मेमोरी रैम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एंड लास्ट, whereas dash is used in most computer to hold on a small piece of software known as boot program, that is boot up। आपका जब मशीन, जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, ओके, उसको हम बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। सो वो बूटिंग प्रोसेस का जो प्रोग्राम है वो आपका कहाँ सेव होता है, वो सेव होता है आपके रोम मेमोरी में, रैंड। ओके, रोम मेमोरी में आपका बूटअप प्रोग्राम सेव होता है। तो लास्ट ऑप्शन विल बी ए। सो योर करेक्ट पैटर्न विल बी बी, डी, ई, सी, ए, दैट इज योर ऑप्शन आंसर नंबर 1 will be the right answer. Okay, let's move on to the next. Okay, next, if L to the base m represents a number L in base m number system, then which of the following equalities are true? Okay, क्या दिया गया है हमें, एक बेस नंबर सिस्टम दिया गया है डेसिमल में, एंड दूसरा उसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर। ओके, ऑक्टल नंबर। ओके, वी हैव गिवन हेक्साडेसिमल नंबर एंड बेस 4 नंबर सिस्टम। ओके, हमें चेक करना है कि ये इक्वालिटीज ट्रू हैं या इनकरेक्ट हैं। Okay, so let's start with the first option. Okay, first we have given 1 1 1 1 1 1, okay, and 1. Okay, as you know this, ये कन्वर्ट करेंगे आप बाइनरी में तो आपको मिलेगा 127, राइट। फ्रैक्शन देख लेते हैं, 0.125, okay, if you multiply it by 2, okay, you will get 0.25, right? So this gives you 0. Again आप 0.25 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, आपको मिलेगा 0.5. Again you can have 0. Last 0.25 into 2 करोगे, again आपको मिलेगा 1. Okay, so this is true. Okay, for this we are getting 127 and fraction value भी हमें 0.125 is true. Okay, so option first is a correct. Second check कर लेते हैं। Okay, second number दिया हुआ है 1 3 3 3. Okay, always जो बेस दिया है जस्ट उसके बेस आपको लिखने हैं 4:0, 4:1, 4:2 and 4:3, right?
अब आप सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे उनके फ्रैक्शन से। ओके, 4:3 क्या होता है आपका 64, राइट। 4:3, right? Now 4 into 4:2 is 16, right? Then 4 and then 1. Okay, so 3 ones are, इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, right? Okay, so 3 ones are 3 plus 12 plus 16 threes are 48. Okay, and lastly 64 ones are 64. Okay, so 8 plus 4 12, 12 and 2 14 and 17. Okay, 17 and 10 11 12, so आपका आ जाएगा 127. Okay, so this is also right, option B is also right. Next check कर लेते हैं 177 to the base of 8. Again आप same method करोगे, 8 raised to 0, 8 raised to 1, 8 raised to square. Okay, 8 raised to 0 as we know 1, 8 raised to 1 8, 8 raised to square is what 64. So 64 into 1 is again same, multiply करोगे आप, 64 into 1 is 64, 7 8s are 56 plus 7. Okay, अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा what you will get 127, right? So this is also right. Okay, next 127 to the base of 16, 1 to 7, अगर आप बेस करोगे 16 का तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 15. ओके, रिमाइंडर 15 एंड इट विल बी डिवाइड्ड बाय 7 एंड 15 को हम हेक्साडेसिमल में लिखते हैं f, दैट विल कम 7f. सो आपका ये ऑप्शन भी राइट है. सो मीनिंग व्हाट, all the 4 options are correct, that is A B C D, that is your option number D is your correct, option number 4 is your correct answer for this particular question. Okay, so इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है. Let's move on to the next. Okay, next आपका है match the list question. लिस्ट 1 में आपके malware टाइप्स दिए हुए हैं एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सो कंप्यूटर आईसीटी के क्वेश्चंस में आपको बेसिक malware टाइप्स और उनके डेफिनेशंस याद करके जाने हैं. ओके, व्हाट इज वायरस, टाइप्स ऑफ वायरस, ओके, अटैक्स, डीडोस अटैक्स, ऑल दोस थिंग्स. ओके, सो यहाँ पे कुछ malware के टाइप्स दिए हुए हैं एंड वी नीड टू मैच रेस्पेक्टिवली. टॉर्जन हॉर्स, ओके, let's try to match at least 2 and then we will start use the elimination trick. Okay, टॉर्जन हॉर्स क्या होता है, आपने मूवीज ओके इसमें देखा होगा कि एक हिडन कोड रहता है. ओके, उसके बाद में इफेक्ट्स होते हैं. ओके, आपने टॉर्जन हॉर्स वाली स्टोरी सुनी होगी, राइट. सो टॉर्जन हॉर्स कंटेन्स अनएक्सपेक्टेड कोवर्ट इफेक्ट. ओके, दैट इज अनएक्सपेक्टेड और हिडन यू कैन से. सो दिस गोज फॉर ऑप्शन नंबर ए. लेट्स सी हम मैच एलिमिनेट कर पाते हैं क्या. ए गोज फॉर 4, सो आपका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट हो जाएगा. नेक्स्ट, worm. Now what is worm? Worm propagates copies of itself through a network. ये क्या करता है, अपनी ही कॉपीज बना के वो ओवर द नेटवर्क ट्रांसमिट करता है. सो ऑप्शन नंबर बी goes for the first one. Logic bomb. Now what is logic bomb? Logic, as you can see, ये बॉम्ब है जो किसी लॉजिक पे ही ट्रिगर होगा. ओके, किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे ट्रिगर होता है. सो triggers action when certain conditions occur. Okay, so आपका ऑप्शन सी का आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, दैट इज triggers action when certain condition occurs. Last, rootkit, last option, Fuchs standard OS calls to hide existence of malware. So आपका ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा. So आपका करेक्ट पैटर्न होगा A goes for 4, okay, B goes for first, C goes for second and D goes for third. Okay, so this will be your correct pattern. Let's see कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. So आपका ऑप्शन नंबर डी is your, that is your option number 4 is your correct answer for this particular match the list. Let's see the next question. Okay, now next question, which of the following are the interactive whiteboard softwares that allows teacher to create digital lessons
annotate documents and collaborate with students in real time. ओके, सो क्या पूछा गया है, इनमें से कौन से इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, ओके, जो अलाउ करते हैं डिजिटल लेसन्स एनोटेशंस के लिए, ओके, पीडीएफ एनोटेशंस और डॉक्यूमेंट एनोटेशंस एंड टू कोलैबोरेट विद द स्टूडेंट्स. ओके, सो इसके आपके करेक्ट आंसर्स हैं जैम बोर्ड, राइट, जैम बोर्ड, ओके, स्टॉर्म बोर्ड एंड कॉन्सेप्ट बोर्ड. ओके, ये आपके क्या है, व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर्स है. ओके, देख लेते हैं एक बार. जैम बोर्ड, स्टॉर्म बोर्ड एंड कॉन्सेप्ट बोर्ड आर यूज फॉर व्हाट, व्हाइट बोर्ड एंड कोलैबोरेशंस. किसके लिए यूज करते हैं हम, व्हाइट बोर्ड एंड कोलैबोरेशंस के लिए. कामटेशिया इज यूज फॉर स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वीडियो एडिटिंग. कामटेशिया हम क्यों यूज करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए. एंड लास्ट, प्लॉटागॉन इज यूज फॉर एनिमेशन पर्पस. प्लॉटागॉन सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं एनिमेशन पर्पस के लिए. सो आपके करेक्ट ऑप्शन है ACD. ACD, that is your option number 2 is your right answer for this particular question. Next, which of the following electronic technologies is the key technology for making the third generation electronic computer? Okay, आप देख सकते हो सेम क्वेश्चन अभी जस्ट कुछ थोड़ी देर पहले हमने देखा, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को लेके पूछा गया था, राइट. जनरेशन वहां पे क्या था, फर्स्ट जनरेशन, जहां पे जनरेशन चेंज है, थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है. सो हमने अभी अभी देखा है ICs आर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट. ओके, सो ये जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाला टॉपिक है, डू गो थ्रू इट. आपको इसमें ईयर याद रखना है, क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो याद रखना है, और कौन सा जनरेशन था वो याद रखना है. ओके, सो योर IC, इंटीग्रेटेड बेस्ड circuit technology, was used in third generation of computer in the year 1965. आपको यह भी याद रखना है. Okay, so your option answer 2 is your correct answer for this particular question. बाकी वैक्यूम हमने कहाँ यूज किया था, फर्स्ट जनरेशन में, राइट, एंड ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन में. बाकी भी आपको पता होना चाहिए टू एलिमिनेट. ओके, एंड माइक्रोप्रोसेसर इज द रॉन्ग ऑप्शन. Okay, so your answer for this particular question, that is for third generation electronic computers, the IC technologies were used. Let's move on to the next. Which of the following would create the most stable computer network with the fastest data transmission? Okay, क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी आपकी फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन, ओके, प्रोवाइड कर सकती है. Use a wireless access point to connect devices. Connect devices wirelessly using mobile phone. Use coaxial cables to connect devices in sequence. Connect device to a switch using optic fiber cable. So आपको ये पता होना चाहिए, सबसे फास्ट आपका ऑप्शन होता है ऑप्टिकल केबल के थ्रू आपका डेटा ट्रांसफर. ओके, ऑप्टिकल केबल के थ्रू आपका डेटा ट्रांसफर. इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा, ओके, दैट इज कनेक्ट डिवाइसेस टू अ स्विच यूजिंग ऑप्टिक फाइबर केबल्स. ओके, अब इसका एडवांटेज क्या है, ऑप्टिकल केबल प्लस स्विच अगर हम लगा देते हैं तो स्पीड एंड रिलायबिलिटी हमें मिलता है. ओके, कोएक्सियल केबल्स, जहां पे भी कोएक्सियल केबल्स हैं वो थोड़े स्लोअर होते हैं. ओके, एंड वायरलेस टेक्नोलॉजीज आर व्हाट, लेस स्टेबल. वायरलेस जो टेक्नोलॉजीज हैं लेस स्टेबल होती हैं और लेसर बैंडविड्थ होता है उनका, लेस बैंडविड्थ. ओके, सो इसीलिए वो हम फास्ट डेटा कम्युनिकेशन के लिए नहीं यूज कर सकते. अंडरस्टूड. सो आपका करेक्ट आंसर रहेगा कनेक्ट डिवाइसेस टू अ स्विच यूजिंग फाइबर ऑप्टिक केबल. दैट इज योर आंसर नंबर 4 will be your correct answer. Okay, you can go through optical fiber plus switch provides what, best speed and reliability. Coaxial is lower and wireless mobile are less stable and lower bandwidth. Okay, so आपका correct answer is answer number 4. Let's see the next question. Okay, again filling the blanks, a para type question. Identify the sequence of word A to E that correctly fills blanks in the following paragraph. Okay, again same trick use करना है आपको पैराग्राफ को सेंटेंसेस में ब्रेक करना है, राइट. सो लेट्स गो थ्रू द पैराग्राफ फर्स्ट.
In the context of human-computer interaction, a dash is an interface built around visual things, and Windows 11 is an example of and dash with this visual things. Dash is the region of the screen used to display information. Dash is a small picture that is used to represent folders and software, whereas dash is a list of options that the user can select from. Okay, so one by one we will see what is the correct pattern. ओके सो जहां पे भी आपको वर्ड दिखे इंटरफेस ओके इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन अ डैश इज अ इंटरफेस जीयूआई इज योर इंटरफेस ओके जीयूआई एक इंटरफेस है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो हमें प्रोवाइड करता है एक इंटरफेस टू इंटरैक्ट विद अवर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम ओके आपके पहले कमांड प्रॉम्प्ट सिस्टम्स होते थे कंप्यूटर्स में जहां पे एक ब्लैक विंडो होता था आपको कमांड बेस्ड ओके लेट्स से आपको फाइल बनाना है तो आपको mkdir टाइप करना पड़ता था कमांड और फाइल नेम सॉरी डायरेक्टरी नेम तो आपका डायरेक्टरी बनता था उसके अंदर आप जाके क्रिएट करते थे फाइल सो एवरीथिंग वाज कमांड बेस्ड नाउ विंडोज एंड ऑल दिस ऑपरेटिंग सिस्टम दीज आर GUI बेस्ड ये सब ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है जहां पे आपको आइकन्स क्लिक्स इमेजेस इनके थ्रू इंटरैक्शंस होते हैं ओके सो आपका इंटरफेस अगर वर्ड है सो GUI is your interface, that is your graphical user interface built around visual things. And Windows 11 is an example of what? Windows क्या है ये? OS. Windows is a OS. So आपका option होगा correct pattern E then A. Let's try to eliminate. क्या हम eliminate कर पाएंगे? Yes, option number 4 eliminate हो जाएगा और option number 2. Okay, let's see forward. Dash is a region of the screen used to display information. ओके स्क्रीन पे विंडो योर विंडो इज द एरिया टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन डैश इज अ स्मॉल पिक्चर दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट फोल्डर और सॉफ्टवेयर ओके फोल्डर और सॉफ्टवेयर अगर फोल्डर हमें रिप्रेजेंट करना है वी यूज आइकन्स क्या यूज करते हैं हम सी आपका MS ऑफिस का आइकन अलग होगा गूगल क्रोम का आइकन एक होता है जिसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो फोल्डर्स वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ओपन होता है और सिमिलरली फोल्डर्स के लिए भी आइकन्स होते हैं राइट सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ए एंड देन योर ओके विंडो हमने नहीं लिखा है यहाँ पे विंडो C राइट देन आइकन D ओके सो लास्ट ऑप्शन आपका क्या बचा है अब B whereas dash is a list of option मतलब मेन्यू नॉर्मल मेन्यू से भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं whenever there is a list of option meaning what it is a menu कंप्यूटर टर्म्स में भी लिस्ट ऑफ ऑप्शंस जो आपको प्रोवाइड किए रहते हैं वो मेन्यू होते हैं दैट इज योर ऑप्शन नंबर B so your correct pattern will be EACDB that is your answer 3 option number 3 will be your correct answer let's move on to the next with reference to the open source software which of the following statements are correct okay with reference to open source software which of the following statements are correct okay see open source softwares publicly market में available होता है okay okay so उसके related क्या कौन से statement true है और false है वो देख लेते हैं it is a software that is distributed with its source code yes उनका source code openly available होता है okay so this is a correct statement it allows anyone to modify the software to best fit their needs yes publicly domain open software source softwares are available okay so that others can customize as per their need the best example इस चीज का आपको बेस्ट एग्जांपल है लिनक्स का जो कोर OS सॉफ्टवेयर OS is a open source software okay that everyone is customizing and creating their own OS okay next देखते हैं it is a software that anyone can use on a trial basis before paying it okay so paying का तो यहाँ पे कोई हिसाब ही नहीं है okay so this is a wrong option Linux is an example of open source software just now मैंने कहा okay Linux क्या है it is an example of open source software so आपका correct statements आपके हैं A B and D okay so your answer number 1 is your correct option for this particular question let's see the next okay so again match the list question is there malware के types दिए हुए हैं और characteristics if you see
दोनों ही पेपर्स में ओके सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, ओके शिफ्ट 1 में भी और शिफ्ट 2 में भी। ओके सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द पैटर्न, और ये वाले क्वेश्चंस आपको करके ही जाने, जैसे मेलवेयर के टाइप्स हो गए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हो गए, सो दिस यू नीड टू गो थ्रू, ये आपको करने ही है, राइट। सो लेट्स डू दिस टाइम बॉम्ब। ओके लेट्स गो दिस ऑप्शन नंबर बी, टाइम बॉम्ब। जैसा मैंने कहा था, इट ट्रिगर्स ओनली व्हेन अ स्पेसिफिक, हमने इसके पहले देखा था लॉजिक बॉम्ब, राइट, वो किसी लॉजिक पे एग्जीक्यूट हो रहा था। यहाँ पे टाइम दिया है तो वो कब ट्रिगर होगा, किसी टाइम पे। सो ऑप्शन बी, ट्रिगर्स एक्शन व्हेन स्पेसिफाइड टाइम ऑकर्स, दिस विल बी योर मैचिंग पेयर फॉर ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रैप डोर। व्हाट इज ट्रैप डोर? इट इज फॉर क्विक अनऑथराइज्ड एक्सेस अ कोड। ये क्या है? ये एक कोड है जो आपको अलाउ करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस। ट्रैप डोर मीन्स बैक डोर। अगर आपको फ्रंट डोर से एंट्री नहीं मिल रही है, मतलब ऑथराइज तरीके से आपको एंट्री नहीं मिल रही है, तो आप अनऑथराइज तरीके से ट्राई करते हैं। ओके सो ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड goes for A. Next, polymorphic virus. It is what? Produces many copies. Okay, produces what? Produces many copies. खुद की multiple copies बनाते हुए चल जाता है। Okay, so polymorphic produces okay varying copies but equivalent copies of itself. Okay, but what equivalent copies? So this goes for option number 1. Macro virus instruction interpreted rather than executed. So ये आपका हो जाएगा। So आपका करेक्ट पैटर्न होगा A. A goes for 2. A goes for 2. So आपका फर्स्ट एंड थर्ड एलिमिनेट हो जाएगा। B goes for 4. B goes for 4 is your second option. So your correct answer will be answer number 2. Answer number 2 will be your correct answer. Okay. Next, if L to the base m represents a number L in base m number system, then identify the correct descending order of the following number A to D when converted to base 10 number system. Okay, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? एक नंबर सिस्टम है L to the base m, राइट, और इन सभी नंबर सिस्टम्स को हमें 10 बेस में, बेस 10 में कन्वर्ट करना है और उनके रिस्पेक्टिव डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, right? Whatever the value we will be obtaining in decimal number system, accordingly in descending pattern we need to arrange this numbers. Okay, so start करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 9C, right? and what is the base? क्या बेस दिया हुआ है? 60. okay, so हम इसे कन्वर्ट करेंगे कैसे? फर्स्ट डिजिट 16 raised to 0 and second digit 16 raised to 1. C always represents what? Number 12. C क्या represent करता है? 12 in hexadecimal number system. So 16 raised to 0 कितना होता है? Okay, so we will be multiplying 12 with 16 raised to 0 and 9 with 16 raised to 1, right? So if you do this, what you will be getting? 12 into 16 raised to 0 is nothing but 12, right? And 16 into 9 you have to do, that is your 144, right? And you will be getting 156 as your answer. Okay, so first option का वैल्यू आपका आ गया 156. Let's see the next one, that is 233. So 233 सेम पैटर्न में हम इसको डिकोड करेंगे। बेस 8 दिया गया है, so 8 raised to 0, 8 raised to 1 and 8 raised to 2, right? 8 raised to 0 is 1, so 1 into 3 is nothing but 3 plus 8. 8 raised to 1 is 8. 8 3s are 24 plus, okay, 8 raised to 2, that is 8 ka square, that is 64 into 2, that is 128. Okay, so if you add this up, you will get 1155. Okay, 155. Next, option number 3, that is 313. बेस क्या दिया हुआ है आपका? 7. So 7 raised to 0, 7 raised to 1, 7 raised to 2, right? So 7 raised to 0 is what? 1. So 1 into 3 is 3 plus 7 raised to 1 is 7
7 into 1, 7 plus 7 raised to square, that is 7 into 7, 81. 81 into 3, you will get 3 and 8 3s are 24. So 243 plus 7 plus 3. So you will get 253. 253. राइट, लास्ट वाला हम यहीं पे देख लेते हैं. ओके, बाइनरी में आपको पता ही है पैटर्न, इट गोज फ्रॉम 1 2 4 8 राइट सो ऑन. सो जहां पे भी 1 है हम उसकी वैल्यूज को ऐड करते हुए चलेंगे. 1 2 राइट, यहाँ पे 2 आएगा, आपका 4 आएगा, देन 8 आएगा, देन 16 आएगा, 32 64 एंड देन 128. okay, so you need to add 128 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2, right? okay, up let's add this. So 16 plus 4 20, 20 plus 128 148, 148 plus 8 156 and plus 2 158. so इसका आंसर आपका आ गया 158. ओके, क्या पूछा गया था, हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर में. सो स्टार्टिंग में आपका आएगा 253, दैट इज ऑप्शन सी. देन you will get 158, that is your option D. then you will have 156, that is your option A. and at last आपका आएगा 155, that is your option number B. okay, so आपका करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए C, D, A and B. Is there any pattern here? C, D, C, D, A, B. Okay. Options. Okay, if you see, answer इसका आपका आएगा आंसर. Okay, options में मिस्टेक है. Okay, आपका इसका करेक्ट पैटर्न होगा यहाँ पे C, D, A, B. Okay, options are not valid here. Appropriate. Shuffling हुई है यहाँ पे. Okay. आंसर ऑप्शन 2 आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था, बट डी एंड सी इंटरचेंज हुए. ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 और you need to remember the pattern. okay, let's move on to the next. What are the advantages of using cloud computing word processing software? okay, what are the advantages? first of all आपको पता होना चाहिए what is cloud computing word processing software. So basically it is a software, right, that is on a cloud storage, okay, where it can be shared by a number of other distributed system. okay, so that is the case. Let's see the statements one by one. So starting with the first one, the user does not have to install word processing software on the computer, right? okay, user does not have to install it on its computer, so this is true. The user does not have to allocate space to install the software in the hard disk. सेम बात बोली गई है, ना तो उसे अपने इंस्टॉल करना है, मीन्स वो ऑटोमेटिकली हार्ड डिस्क पे भी नहीं आएगा. सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट. सेकेंड, स्टोरेज स्पेस टू सेव द डॉक्यूमेंट इज प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड प्रोवाइडर. ओके, द यूजर्स can open or edit the document from any computer which has internet facility. Yes, this is why we use cloud computing softwares. okay, क्लाउड स्टोरेज यूज करने का या किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर्स को यूज करने का मेजर एडवांटेज यही है. ओके, यू डोंट सेव एनीथिंग लोकली आप कुछ नहीं सेव करते हैं, सब चीज आपकी फैसिलिटी जो है इंटरनेट पे होती है, राइट. सो एंड लास्ट, इफ द यूजर हैज स्लो इंटरनेट कनेक्शन देन ही शी वुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम एक्सेसिंग और डाउनलोडिंग his or document. No, just now I said it is based how your internet facility is there. okay, बिकॉज ये आपका सब क्लाउड पे जाएगा, इंटरनेट के वाया आप उसको एक्सेस करोगे, आपके लोकल स्टोरेज या लोकल मशीन पे कुछ भी सेव नहीं होता है. ओके, सो ओनली करेक्ट स्टेटमेंट्स आर ए बी सी, दैट इज योर आंसर. ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. इन MS Excel a formula $1 plus $3 plus 5 in cell D9, sorry, when copied to cell F12 will become what? okay, क्या पूछा गया है, फॉर्मूला दिया हुआ है $1 plus $3 plus 5.
ये किस सेल में है? D9 सेल में है एक्सेल शीट के। अगर हम इसी फॉर्मूले को उठा के कॉपी कर रहे हैं सेल F12 में, सो व्हाट विल बी द चेंजेस? ओके, सी थोड़ा एक ग्राफिकली आप बना लो कि आपने ये D है आपका, और ये लेट्स से सपोज 7 8 9 7 8 9 10 11 12, okay, E F, right? So this is the pattern. ओके, विजुअली इसलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि आपको आइडिया आ जाएगा कि हाउ मेनी प्लेसेस आर वी शिफ्टिंग। ओके, सो अकॉर्डिंगली वो फॉर्मूला भी उस तरीके से चेंज होगा। ओके, क्या बोला गया है क्वेश्चन में? D9 पे इट वाज एक्चुअली प्रेजेंट, सो एक्चुअल फॉर्मूला वाज प्रेजेंट हियर। हमने उसे उठा के कहाँ पे कॉपी किया? हमने कॉपी किया है उसे F12 पे। कहाँ पे कॉपी किया है? F12 पे। ओके, मीनिंग हमने राइट कितने पोजीशन से शिफ्ट किया है? राइट हमने 1 2, राइट वी हैव शिफ्टेड 2 प्लेसेस। हाउ मेनी प्लेसेस? 2 प्लेस हमने हम राइट की तरफ गए। और डाउन कितने प्लेस आए हैं? 3, 1 2 एंड 3। सो डाउन कितने आए हैं हम? डाउन विल बी 3, राइट? सो अकॉर्डिंगली इन प्लेसेस का इफेक्ट आपके इस फॉर्मूला पे आएगा, राइट? सो जैसे ही मैंने कहा कि B1 शिफ्ट्स, ये जो आपका B1 है अब वो शिफ्ट हो जाएगा राइट, टुवर्ड्स राइट बाय 2 कॉलम। तो अगर B पे था वो इनिशियली और 2 कॉलम राइट की तरफ जा रहा है तो वो अब C से B, C एंड वो D पे पहुंच जाएगा। किस पे पहुंच जाएगा? D पे। सो आपका $1 चेंज होके हो जाएगा $1। अब ये चेंज क्यों हुआ? आई एम रिपीटिंग अगेन, हमने D9 को का फॉर्मूला कॉपी करके कहाँ पे पेस्ट किया था? F12 पे, राइट? सो वो कितने पोजीशंस राइट की तरफ शिफ्ट हुआ? 2 प्लेसेस। सो अकॉर्डिंगली B इज शिफ्टेड 2 प्लेसेस टुवर्ड्स द राइट। नाउ ये जो आपका C है, C$3, ओके, नाउ दिस विल आल्सो शिफ्ट टू द राइट। कितने पोजीशन से? सेम 2 पोजीशन से ये भी शिफ्ट होगा। तो C पे था तो अब वो कहाँ पे आ जाएगा? E पे, राइट? सो आपका $1 था, वो आपका क्या हो गया? वो आपका बन गया $1 एंड आपका $3 था, वो आपका बन जाएगा $3, राइट? सो लेट्स सी, हमारे फॉर्मूला में कहीं पे है, और 5 आपका एज इट इज कांस्टेंट रहेगा। सो $1, सो दिस गेट्स एलिमिनेटेड, दिस गेट्स एलिमिनेटेड स्ट्रेट अवे। D1 ये कोई सेंस ही नहीं बनता है, so this option also gets eliminated. The only option that is matching is $1 plus $3 plus 5. So this is your correct answer. Okay, understood? If you are not able to, let's say sometimes ये mistakes हो सकती हैं कि आप डायरेक्टली एड अप करके आप उसमें डायरेक्टली चेंजेस कर दो। बेटर इज टू, अगर थोड़ा भी आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप विजुअलाइज करके या ड्रॉ करके फटाक से इसको कर लीजिए। ओके, so in this case your answer option 4 will be your correct answer. Let's move on to the next. A web page displays the following information in which underlined word is a link to another web page. Okay, now यहाँ पे words पे ध्यान दीजिए। A web page displays the following information in which the underlined word is linked to another web page. Whenever it is linked to another web page, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है हाइपर टेक्स्ट या हाइपरलिंक का। हाइपर टेक्स्ट या हाइपरलिंक का, हाइपर टेक्स्ट या हाइपरलिंक। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट आपका आ जाता है। Why we use hypertext or hyperlink? To link one page or to move from one page to another page. Okay, so correct option आपका आएगा hypertext. Okay, so which of the data organization method is used? Hypertext is used to link from one page to another page. Okay, ये आपको याद रखना है। Now what is HTML? HTML is basically hypertext markup language. Okay, so this is incorrect. Storyboard is the storyboard telling tool. Data scheme is related to database. Okay, so आपका correct answer will be what? Answer number
2. Okay, so you can see hypertext is used for linking words to other docs or pages, right? HTML is the language, not the method. Storyboard is used for visual planning, and data scheme is what related to data structure or database, DBMS. Okay, so your correct answer will be answer number 2. Let's move. Okay. Identify the incorrect logical sequence of the following 4 randomly ordered sentence A to D about the discovery of computer mouse. Okay. So we need to identify the correct logical sequence. So we use the mouse today because it is the pointing device that is the easiest to use compared to other devices such as joystick, trackballs, etc. Right. So this, okay, we need to identify the sequence. हमें sequence बताना है. Okay. So dog Albert was bored at a conference and started thinking about tracking movement of a plane using 2 sets of wheel moving a board in orthogonal directions. Okay, अब ये कुछ statements है, हमें इन्हें sequence में लगाना है. Dog Albert remembered these notes when he was trying to come up with a device to select object on a computer screen. Dog Albert tells the story of how he invented the mouse. So सबसे पहले सीक्वेंस किसी भी स्टोरी में आता है. So यही होता है कि how हम बताना शुरू करते हैं कि ओके हमारी स्टोरी क्या है. ओके, सो ऑप्शन डी विल फर्स्ट कम. ओके, ये आएगा आपका सबसे पहले. ऑप्शन डी आपका सबसे पहले आएगा. राइट. नेक्स्ट विल बी ही थॉट ऑफ ट्रैकिंग. उसने एक आइडिया सोचा. राइट. वो एक कॉन्फ्रेंस में बोर हो रहा था. राइट. उसने एक आइडिया सोचा ऑफ ट्रैकिंग मूवमेंट्स. ओके, ट्रैकिंग मूवमेंट्स ऑफ अ प्लेन यूजिंग 2 सेट्स ऑफ अ wheel in orthogonal direction. Okay, so this will be your second in the sequence, that is B. Right. Next, he took down those notes. उस आइडिया को उसने नोट डाउन किया and he was trying to come up with a device that can actually point on the computer screen. Okay, using that theory, उस theory को use करके he was trying to build a device that can select the objects on a computer screen. So this will come, option C will come next, and at last will be the mouse we use today is a pointing device that is easiest to use as compared to other joystick and trackballs. Okay, so your correct pattern will be DBCA. आपका correct pattern बन जाएगा D, then B, then C, then A. Here एंगलबर्ट ने अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट की कि कैसे माउस उसने बनाया. उसे कॉन्फ्रेंस पे he started thinking the tracking of a movement, then he took the notes, and today is the mouse that we use. So option D, that is your answer. Option D will be a correct answer for this particular question. So answer number 4 will be your correct answer, option number 4. Let's move on to the next. Okay, let's start with next. If L to the base of M represents a number L in base M number system, then which of the following equalities are true? As I said, जैसा मैंने कहा, आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, नंबर सिस्टम, मेमोरी सिस्टम, इंटरनेट, वायरस, डेटाबेस, ये कुछ टॉपिक्स हैं आईसीटी के जो आपको करके ही जाना है. ओके, एग्जाम्स के लिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं. ओके, नंबर सिस्टम्स में आपके मोस्टली क्वेश्चंस बनते ही हैं कंप्यूटर से. ओके, इसमें आपके ऑल्सो अदर टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं जैसे बाइनरी टू डेसिमल, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट. ओके, सो ये सब आपको देख के जाने हैं. ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमें इनइक्वालिटीज को चेक करना है if there is any inequality. So starting with the last one, what it is saying, 2000 in base 4 number system represents 512. Okay, फ्रैक्शन के आगे की वैल्यू को हम कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं कि इक्वल आ रहा है या नहीं. Then we will go for the fraction part. Okay, 2000 to the base of 4. So let's convert it. 4 raised to 0, 4 raised to 1, 4 raised to 2 and 4 raised to 3. Right, now others are 0, so straight away इनको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. 4 raised to 3 कितना होता है हमारा? 4 into 4 into 4, that is 16 into 4, that is 64, and we will be multiplying it by 2. So आपका आएगा 128 and here it is 512. So straight away
this is there is an inequality, so this gets eliminated. Next देख लेते हैं 200 in hexadecimal is equivalent to 512. Let's check this. 200 then base क्या दिया हुआ है आपका 16, so 16 raised to 0, 16 raised to 1 and then 16 raised to 2. Okay, since these are 0, so these gets eliminated means we are not counting it. 16 raised to 0, 16 raised to 2 into 2, that is 16 into 16 into 2, so this will come your 256 into 2, 256 into 2, that is 512, right? 512. So this one matches. Okay, this one matches the correct sequence. Next, 1000 in the base of 8. Okay, 8 के बेस में है, so 8 raised to 0, 8 raised to 1, 8 raised to 2 and 8 raised to 3. So others are 0, 8 raised to 3, that is your 8 into 8 into 8, right? So this will be your 512 straight away. So this one also matches, right? Last, this one, how many zeros are there? Okay, 1 2 3. Okay, as we know directly binary number system, straight away हम just number को देखेंगे कि किस नंबर पे 1 है, right? So 1 2 4 8 16 32 64 128, okay, 256 and 512. So this one also matches. Okay, so your correct options or correct values for this number, correct equality patterns are A, B, C. That is your answer. Option 4 is your correct answer for this particular question. Okay, that is A, B, C are the equalities number system conversion given here. Okay, let's move on to the next. Next, authentication, biometrics, IP address and MAC address. So ICT टर्म दिए हुए हैं और उनके हमें रेस्पेक्टिव डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन से मैच करना है. So biometric, as you know, it is what? It is used to what? For encryption purpose. Okay, now it is used for scanning. आपका thumbprint, retina scan, right? All those are what? Biometrics में होता है, right? So this goes for on second one. Biometrics relies on certain unique characteristics of human being such as retina scan. Okay, it can be retina scan, thumbprint, anything. So option B goes to the second. IP address, what is IP address? See, IP address identifies what? Which identifies the device on a network. Identifies what? Device on a network. अगर आपका machine network से connected है तो एक IP address के through connected होगा. Okay, so option C goes here. Now MAC address, this is basically your machine ID, identifies which device is connected to a given IP address. Okay, so आपके machine का ID ये बताता है, what your machine MAC address. Okay, so option D goes here, first one. And last, authentication verifies that data comes from a secure and trusted source and works with encryption to strengthen internet security. So authentication means to validate, okay, if the trust or a person is trusted source or not. So option A goes here. So A goes for 3. Elimination trick लगाते हैं. A goes for 3. So there is only for one option, that is your option number 2 is your correct option for this particular question. Okay, so with this we complete our ICT PYQs of 21st and 22nd August. अगर आपको ये explanation useful लगा हो, so do like and share the video. Also do not forget to subscribe the Instant Seekh channel. Instant Seekh channel को subscribe कीजिए. ऐसे ही पेपर 1 related topic wise videos roll out होंगे channel पे. Okay, so for that stay tuned on the channel and keep practicing the PYQs for your upcoming UGC NET examination. And thank you. Jai Hind.